Okay. So write down the topic. Torque on a dipole when placed in a uniform electric field. Torque on a dipole when placed in uniform electric field. तो डाइपोल के बारे में ओनली वी आर स्टडिंग कंटिन्यूइंग कर रहा है डाइपोल. अगर मैं डाइपोल रखूंगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में व्हाट विल हैपन, टॉर्क कितना है, उसका वैल्यू क्या है, एवरीथिंग विल स्टडी. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड व्हाट विल हैपन. देखो, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल स्पेसिंग में है. हियर आई प्लेस ए डाइपोल. डाइपोल क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू separated by distance L and L. Okay. In electric field में if I place a dipole, what will happen? इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा and you know the force formula is QE. QE. Okay. And negative charge also QE लगेगा but opposite direction में QE. Now net force कितना है? Net force is 0. Net force acting on the dipole is 0. Okay, so because dono forces acting in the opposite direction, equal and opposite direction. Okay, that's why it is net force is 0. Okay, now इसके ऊपर torque लगेगा नहीं लगेगा? Tell me. Torque will be there for this dipole or not? इसको A force को ऐसा खींच रहा हूँ, A force को ऐसा खींच रहा हूँ, so torque will be there. Torque will be there. So when will be the torque will be there? Tell me. Two equal and opposite forces should act, but does not have same line of action. At that time, torque will be acting. Line of action means, देखो, this force and this force same line of action में है तो there is no torque. Okay, same opposite forces में same line of action नहीं है. That time there will be torque. So उधर point लिख लो, very important. Two equal and opposite forces not having same line of action. In this case में two equal and opposite forces not having same line of action. Same line of action means ऐसा रहने का, but ऐसा है, not having same line of action. Therefore, it rotates about center of mass. It rotates about center of mass due to torque. Okay, understood? Now इसका फॉर्मूला क्या है, we will see. Derivation of torque. So torque का derivation करेंगे, C को मतलब क्या है कैसे है बोल के. So here uniform electric field is there, and I place a dipole minus Q plus Q. Okay, separated by distance L and L. L and L. Angle is theta. Okay, so ये वो पॉइंट मान लो, ठीक है. Angle theta. Okay, so dipole place किया ऐसा, there is a you know already there is a force acting QE and QE in the opposite direction. I want to find torque. Okay, first torque is a vector quantity and torque का formula, basic formula मालूम है ना? What is the formula? याद है फर्स्ट ईयर का? F R sin हाँ, theta. F cross R, R cross F, R cross F. R cross F. Okay, so I can write like simply F into perpendicular distance. This is a torque. F into perpendicular distance is a formula, right? Okay. Now इस force की वजह से the torque will be clockwise or anti-clockwise. इस पेन को मैं ऐसा push कर रहा हूँ. It is fixed at the center of mass. So clockwise or anti-clockwise? ये वाला. Clockwise. Clockwise means जो clock घूमेगा, that is called clockwise. Okay. हाँ, ये force की वजह से
the dipole will rotate clockwise and anti-clockwise. Clockwise. So दोनों सेम डायरेक्शन है. So इसके वजह से tau 1, इसके वजह से tau 2, two torques are there. Net torque will be, since both are in the same direction, net torque will be tau 1 plus tau 2. Right? Tau 1 plus tau 2. Okay. Now इसका torque का basic formula will use and will calculate tau 1. टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, सो फोर्स को पीछे एक्सटेंड करो, फोर्स एंड सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस वन आई वांट. दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? एल का इस तरफ कंपोनेंट, एल का इस तरफ कंपोनेंट. टेल मी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाउ मच? L sin. So force is QE into perpendicular distance is L sin theta, प्लस इसका भी देखो, फोर्स पीछे एक्सटेंड करो एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. सो दिस आल्सो एल का क्या होगा? एल का cos थीटा एंड एल sin थीटा. टेल मी व्हिच वन? एल का कंपोनेंट क्या होगा? नहीं देखो, हॉरिजॉन्टल एंड दिस वन, हॉरिजॉन्टल दिस वन, राइट? थीटा अल्टरनेट एंगल्स. नाउ एल sin थीटा ओनली, सेम. तो कितना होगा? QE into L sin theta. Okay, so what will be the addition? कहते हो 2QL E sin theta. What is Q into 2L? Q into 2L is called as P. Dipole moment, right? So net torque will be PE sin theta, or we can write as P cross E. This is the formula for torque. So net torque is equal to P cross E is the formula for torque. When dipole is placed in uniform field, वो rotate करेगा with what torque? PE sin theta. Theta is the angle between dipole moment and electric field. That is important. Dipole moment and electric field. So whenever uniform field में रखने से always net force हमेशा 0 है. Net torque will be there. Net torque is PE sin theta. Finished? Now we'll talk about the maximum torque and minimum torque. So torque का formula we know, that is PE sin theta. Now tell me, when will be the torque is maximum? At what angle में maximum? 90. Okay, theta is 90 degrees, or one more angle also below 360 में होगा. Below 360. 180. 180 sin 180 0. और एक एंगल बोला, I'll tell you. 180 से ज्यादा, 360 से कम. 270. 270 में also sin value is 1. Okay, 270 degrees, right? Okay. Now मतलब डायग्राम के हिसाब से if I draw and maximum torque formula क्या होगा? Maximum torque will be दोनों में 1, right? Sin it is 1. So PE is the maximum torque. PE. Whenever they talk about maximum torque means PE बोल के लिखने का. Okay. If I draw diagram के through electric field, 90 degrees कैसे draw करेगा? Theta is the angle between dipole moment and electric field. Dipole moment ऐसे draw करो, minus Q plus Q. देखो dipole moment ऊपर है and electric field 90 degrees. These are 90 degrees. 270 का कैसे ड्रॉ करेगा? चल में 270 का हाउ विल ड्रॉ? देखो थीटा शुड बी एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? देखो इफ डाइपोल मोमेंट को ऐसे रोटेट करूंगा, सो कितना एंगल है? 180.
If I rotate again 90 degrees, it is 270. 270. So the dipole moment is matlab aisa. Because dipole moment is p downwards, right? Dipole moment and electric field ka angle is 270. This is maximum torque. So maximum torque का formula आ गया आपको PE. Okay. Now minimum torque का एक कहानी is there. Okay. Tell me, minimum torque का formula will be theta is how much? 0 0 degrees or 180. 180. And torque, minimum torque is how much? 0. Right? Now इसका 0 का if I see, इसमें थोड़ा कहानी देखो समझो. So 0 means if I draw the electric field and dipole moment in this direction, right? Minus Q plus Q. देखो dipole moment and electric field both are in same direction, angle is 0, right? Okay. Now देखो what will happen if I rotate this dipole, ये dipole है ना? थोड़ा anti-clockwise rotate करके if I rotate like this, so minus Q plus Q. Tell me what will happen if I leave? Dipole का rotate करके if I leave, what will happen? हाँ बोलो. Dipole इसके ऊपर फोर्स लगेगा QE, इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा QE, and torque will be there. It want to come back to the original position, right? If I extend like this, if I leave again, torque की वजह से zoom बोल के आएगा. And आगे some questions में समझ में आएगा, ये थोड़ा oscillate होगा, उसका time period भी find करेंगे आगे का, उसका time period भी find करेंगे. But now तो अभी कितना भी करो इधर आ जा रहे हैं. Okay. This type of equilibrium is called as which type of equilibrium? This one. आपको वो जगह अच्छा नहीं अच्छा है, किधर भी जाओ उधर आ जा रहा है. So that equilibrium is called as we studied this one, याद है वर्क फॉर एनर्जी में. एक बॉल इधर है, एक बॉल इधर है, इधर को थोड़ा धक्का दिया तो क्या होगा? It will come back, it will come to the original position. It is not liking that position, it will not come back to original position, right? ये वाला इसको धक्का दिया तो क्या होगा? Tell me. Again it want to come back to original position. 3 equilibriums are there. Names याद है? Stable. हाँ. दूसरा Unstable. and Neutral. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. इसमें कौन सा बोलने का? Stable. स्टेबल. बिकॉज आप कितना धक्का दे फिर से आ जाएगा, ऐसे कितना भी घुमो फिर से आ जाएगा. स्टेबल इक्विलिब्रियम. सो एंगल 0 डिग्रीज इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम. नाउ 180 डिग्रीज का देखेंगे कहानी. ओके. So this is the electric field. 180 degrees means dipole will be in the opposite direction, right? So minus Q plus Q. Separate by distance. Okay. Now इसको भी मैं थोड़ा ऐसा रोटेट करके छोड़ूंगा. Okay. I rotate like this. This is plus Q. This is minus Q. Okay. What will happen? This is the original position. This is the original position. This is the final position. Okay. Then क्या होगा? If I leave, what will happen? ऐसे थोड़ा extend करके if I leave, इसके ऊपर force लगेगा QE. इसके ऊपर force लगेगा in the opposite direction to that of electric field QE. Again, it don't want to come back to original position. It will go that side. Why it is going that side? To become stable. So such type of equilibrium is called as unstable equilibrium. Unstable equilibrium. Unstable means angle is 180 degrees. Stable means angle is 0 degrees. And maximum torque का formula भी आ गया आपको PE. Okay. Now questions करेंगे इसका little bit. Small questions थे, थोड़ा hard questions भी करेंगे. So why is it unstable for 180? Unstable means when I disturb from the equilibrium position, if I leave, again it is not coming back to original position. It want to run away from the original position. देखो
when I extend, this is original position, right? If I extend extend kiya, what will happen? The force will be acting QE and QE. So since torque is acting, it want to rotate opposite direction mein. It don't want to come back to original position. That's why unstable. It'll It is want to not go like to 0 degrees, right? huh? It'll want to go to 0 degrees. 0 degrees. It want to go to 0 degrees. That's called stable. It don't like that position. It want to run away from that position. Understood. Chalo. Copied. Okay. Numerical करो ना. Find the orientation of theta of the dipole with respect to electric field, of which torque is half the maximum value. In that condition, we want to find theta. Yes. Yes. So torque is half the maximum value. So torque ka formula PE sin theta. This is a basic formula. And maximum torque ka PE, right? So cancel 30 degrees. चलो. Now थोड़ा hard question करेंगे. An electric dipole has a fixed dipole moment P. एक dipole is there. एक fixed dipole moment is there P, which makes an angle theta with respect to x-axis. An electric field the given is E I cap. Okay, this is a x-axis. This is y-axis. एक dipole is placed with an angle theta with respect to x-axis. एक dipole ऐसा है. Minus Q plus Q. Dipole moment P, it is making x-axis से कितना angle theta है. And electric field किस तरफ है initially? E1 is how much? E I cap. मतलब I के x direction में electric field is there. E I cap. मतलब x direction में. Okay. It experiences a torque tau I cap. Torque tau 1 is tau T1 बोलो. T1 is tau K cap. Okay. So T1 first find करेंगे. Tell me T1 कितना है when electric field like this? And electric field is in x direction, right? X direction. Tell me what is the torque formula? P cross E. P cross E. देखो dipole moment and electric field का angle is theta, right? So PE sin theta. And direction देखो direction कैसा आएगा? P cross E करो. P cross E. याद है ना cross product का? P fingers लगाओ cross E. Okay. So it will be कितना कौन सा direction है? Inverse है. Inverse is z axis. Z axis is k cap only, right? So he only given z axis को k cap. Right? Tau 1 का we found. Next. Now क्या किया? When subjected to another electric field E2 √3 E J cap में दूसरा electric field on किया. Okay. So दूसरा electric field on किया. Which direction में? It is in J cap. मतलब y direction में you have E2 is equal to √3 E ऐसा ऊपर है. Okay, electric field. Now dipole तो उधर ही है. Second में on किया. Now torque is T2. Try to find torque T2. Tell me what is the angle between dipole moment and electric field in second case? This angle is how much? Dipole moment and electric field angle is how much? 90 minus theta. 90 minus theta. So therefore what is the formula? PE sin 90 minus theta
कैन टेल मी डायरेक्शन कैसा होगा? डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में होगा? P Minus क्रॉस k. E. It is minus k cap. आया चलो, tau1 tau2 ऑन किया. Now he has given relationship T2 is minus of T1. सबसे करो, T2 is PE. What is sin 90 minus theta is cos theta into minus k cap. This is T2 is equal to minus T1. T1 is PE sin theta k cap. Okay. So minus minus cancel. PE. What is trying to find? The angle theta is asking. Okay. PE cancel. So what is the answer? Tan theta is equal to k cap cancel. Something wrong? We missed anything? Either electric field कितना है? Either electric field E2 is how much? This is E1, E2, right? E1 is E only. E2 is root 3. So this is T2, right? Root 3. So मैं E के जगह में root 3 लगाने का. Root 3. Now E cancel. So therefore tan theta is equal to root 3 and theta is how much? 60. समझ में आया? सो पी साइन थीटा से देखो कितना बनाया वो. एक्स एक्सिस में फर्स्ट स्विच किया, डाइपोल तो उधर ही है, फिक्स्ड है, ऐसा लगा. दे कैलकुलेट द टॉर्क. बाद में सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया इन द वाई डायरेक्शन में. दैट टाइम टॉर्क दे कैलकुलेट एंड यू गिवन द रिलेशन, वी गॉट थीटा. अंडरस्टूड? एनीबॉडी डाउट्स? So what happened to minus k cap? माइनस के कैप है ना, देखो के कैप कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, So one was plus k cap, the other was minus, right? माइनस के कैप. भाई देखो इसका T2 का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका T2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाई डायरेक्शन में एंड डाइपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. अप्लाई करो, P क्रॉस E will be in the opposite direction to that of this one. That's why minus k cap inside positive लिया. Okay? No. देखो एक देखो इलेक्ट्रिक फील्ड is given to you like this and dipole is placed angle 30 degrees में. Okay. Now what it told, just at the moment dipole is released, just मैं ऐसा लीव किया, लीव करने से find the angular acceleration. Angular acceleration symbol is alpha, right? Alpha is how much? Definitely रिलीज करने से QE लगेगा ऐसा एंड टॉर्क रहेगा. ट्राई करो, देखते हैं. LNL. इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स में आएगा. कितना शोएंगे? आया शोएंगे.
So we type this one we done in system of particles rotational motion में we done this type of in rod को release करने से. See whenever normal में in straight line motion में whenever they ask acceleration we use F equal to ma. Always we will take this and we will try to find. And whenever in this type of में angular acceleration पूछे तो Torque इसके is जगह में equal to alpha. I alpha यूज करना पड़ेगा to get acceleration whenever acceleration पूछे तो. Okay. Normally इसका normal torque के वजह से कितना है formula? Torque formula is P E sin 30, right? Is a torque, normal torque ka, and that is equal to I alpha only because both the torques is same, right? Now P is nothing but Q into 12, Q into 12 E sin that is 1 by 2. So 2 to cancel. 1 by 2, 2 to cancel. Okay, is equal to I is how much? About this axis में एक mass m है, एक mass m है. Now what is the moment of inertia about this axis? This axis के ये center का about axis में moment of inertia कितना है? 2 याद है? ml. हाँ 2 ml square. हाँ देखो दिस एक्सिस का r डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर में एक मास m है रोटेटिंग. ओके ऐसे घूम रहे जूम जूम जूम. व्हाट इज फॉर्मूला? m r स्क्वायर, राइट? सो इधर फॉर्मूला क्या है? m l स्क्वायर. ओके सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? m l स्क्वायर प्लस m l स्क्वायर. सो कितना होगा? 2 m l स्क्वायर. सो सब करो 2 m l स्क्वायर इंटू अल्फा. एक l कैंसिल. सो Q E by 2 ml is equal to alpha. This is the answer. Okay, understood है वाला? So कभी भी ऐसा अल्फा पूछे तो नॉर्मल टॉर्क डाइपोल तो टॉर्क उतना ही एक्ट होगा. दैट इज इक्वल आई अल्फा. एनी बॉडीज व्हिच इज रिलीज्ड लाइक इट इज मोशन में आई अल्फा से वी कैन इक्वेट. नॉर्मल न्यूटन सेकंड लॉ वी आर अप्लाइंग F इक्वल टू ma वाला. ओके चलो लास्ट प्रॉब्लम चलिए जाए. तो हार्ड क्वेश्चन से लिया. An electric dipole is formed two particles fixed at the ends of a light rod of mass of length L. The mass of each particle is m and charge is minus q. The system is placed in such a way that dipole axis is parallel to the electric field. Okay, so क्या किया? This electric field dipole is placed exactly parallel to the electric field. So minus q plus q center O. Total length is light rod का length is L. मतलब this will be in this case में L by 2 L by 2, right? Total length is L in this question में. Okay, the system is placed in such a way that dipole axis is parallel to the electric field that exists in the region. The dipole is slightly rotated about the center and released. Slightly rotate किया ऐसा and release किया. And because of that force, it coming, and because of inertia it is coming back like this oscillate करता जाएगा. He is asking what is the time period of this dipole. Okay, so याद रखो when a shortcut formula is there, whenever dipole is placed in electric field and start oscillating, okay, time period will be 2 pi under root I by Pe. देखो I by Pe, where I is moment of inertia and P is a dipole moment. A general formula कभी भी we can use for when dipole is placed in electric field and oscillating. 2 pi under root I by Pe. Okay, now find करो moment of inertia in this case is how much? I is how much? Is L by 2 there. इसका mass m है, इसका mass m है. So क्या होगा? m L square by 4 mr square, right? R is L by 2 plus m L square by 4 कितना होगा? ml square by 2, right? I का P is nothing but dipole moment is Q into L, right? P is nothing but Q into total distance is how much? L by 2 plus L by 2 is L. तो substitute करो इसमें formula. 2 pi under root I is
ml square by 2 p is q into l into e. Right? L cancel. Therefore, 2 pi under root ml by 2 qe is the answer. Is the time period. They can give different length, 3L, 4L, 5L, anything. कुछ भी होने दो, आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको बैठ करना पड़ेगा. I mentioned in the formula sheet also. I think that formula is there in 23rd formula. Oscillation of dipole and electric field, 2 pi under root I by PE is the formula. Okay.